Good evening, everyone. So, in this lecture, I am going to solve exercise 6.1 from question number 1 to question number 8. So, make sure you should know the basic standard formula of Laplace transform. If you do not know, then don't worry, you can go to my channel. In my previous video, I have already explained about this basic standard formula of Laplace transform. So, without further delay, we will start this session. My name is SR Prusti, and you are watching my channel Love You Science. So, let's start. See, exercise 6.1, question number 1, we'll find out Laplace of 3t plus 12. So, we can write Laplace of 3t plus Laplace of 12. So, then we can write 3 is constant, bahar le aao, 3 Laplace of t plus Laplace of 12. So, I can write down Laplace of t is what? You know, Laplace of t to the power n is n factorial by s to the power n plus 1. So if it is t to the power 1, Laplace of t to the power 1, so n is 1, matlab 1 factorial by s to the power s 1 plus 1. So it is coming 1 by s square. So I can write down here 1 by s square plus, what is Laplace of 12? You remember Laplace of any constant is constant by s. So matlab it is coming 12 by s. So your final answer is 3 by s square plus 12 by s. Then you simplify, if we take 3 by s as common, then it is 1 by s plus 4. Coming to next question, 6.1, question number 2, we'll find out Laplace transformation of a minus bt whole square. So first, by using a minus b formula, we can write Laplace of a square plus b square t square minus 2abt. Then we'll take Laplace of a square plus Laplace of b square t square minus Laplace of 2abt. So a square is constant, so Laplace of constant is constant by s. Laplace of any constant is constant by s. You should remember this one. So a square is constant, so it is s square by s plus ये b square is common, b square तो constant बाहर ले आओ, then Laplace of only t square minus here 2ab is constant, then only will take Laplace of t. Then I can write a square by s plus b square. Laplace of t square is what? Laplace of t to the power n is n factorial by s to the power n plus 1. मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ. So here Laplace of t square is 2 factorial by s to the power 2 plus 1. So matlab it is coming 2 by s cube. So here I can write 2 by s cube minus 2ab Laplace of t. Just now I told Laplace of t is what? 1 factorial by s to the power 1 plus 1, matlab 1 by s square. So it is 1 by s square. So your final answer is a square by s plus 2b square by s cube minus 2ab by s square. Then if I take a by s as common, then it will be a plus, sorry, we cannot take a as common. Oh, a second. If I take 1 by s as common, then it is a square plus 2b square by s square minus 2ab by s. That is your final answer. Okay. So coming to third question, exercise 6.1, question number 3, we'll find out Laplace of cos pi t. See, you know Laplace of cos of a t. What is that formula? First lecture में मैंने explain किया था Laplace of cos function, Laplace of sin function. So Laplace of cos a t is what? S by s square plus s square. If it is sin,
Laplace of sin at is s by a by s square plus s square. Laplace of cos of hat hyperbolic function, then same thing you will keep, only denominator में change कर दो sin s square minus s square. Laplace of sin hat is equal to a by s square minus s square. These are the four formula at least you should know. So Laplace of cos pi t, देखो Laplace of cos at is s by this one, मतलब s by s square plus s square. So here what is a? A is pi, मतलब s by s square plus pi square. Is it clear? Next is cos Laplace of 6.4 question number 4, Laplace of cos square omega t क्या है? देखो you know sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. Similarly cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. Here theta is omega, मतलब cos square omega is 1 plus cos 2 into omega t by 2. Here theta is omega t. देखो theta is omega t. So cos square omega t will be 1 plus cos 2 omega t by 2. So here we can take Laplace of 1 plus cos 2 omega t by 2. So 1 by 2 तो constant बाहर ले आओ, then Laplace of 1 plus Laplace of what? 2 cos omega t. इसमें ब्रैकेट भी दे दो, ठीक है. Then I can write half Laplace of 1 is 1 by s, Laplace of constant is constant by s. Then Laplace of 2 cos omega t. See here a is 2 omega. Laplace of cos a omega t, अभी भी मैंने बोला था s by s square plus s square. So here a is what? 2 omega. So मतलब s by s square plus 2 omega square. So what is your final answer? Your answer is 1 by 2 1 by s by s square plus 4 omega square. That is your final answer. So now question number 5, exercise 6.1, we'll find out Laplace of e to the power 2t into sin ht. So if you are getting this type of question like e to the power 80 into sin into some function, then you will apply fast shifting theorem. क्या है? You will apply fast shifting theorem. Fast shifting theorem or fast shifting method. So what is fast shifting method? Already I have explained in my previous class. फिर भी थोड़ा सा बोल रहा हूँ क्या फास्ट शिफ्टिंग मेथड. एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन है. लेट लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस. ये भी एक सिंबल है, लैप्लेस का सिंबल है एफ बार एस और एफ एस. देन लैप्लेस ऑफ ई टू द पावर 80 इनटू दैट फंक्शन, मतलब लैप्लेस ऑफ e to the power 80 into that function will be equal to f bar s minus a. आपको जस्ट क्या करना है, सिंपली you find out Laplace of that particular function, then you replace that value. In place of s you just put s minus a. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो. लेट e to the power 2t into sin t और sin 3t का लैप्लेस क्या है. डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर. पहले तो sin 3t का लैप्लेस निकालो. sin 3t का लैप्लेस इज क्या है? a बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 3 तो ए स्क्वायर प्लस 9. सो इफ यू टेक लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t into sin 3t, योर आंसर विल बी 3 बाय s. हियर व्हाट इज a? a इज 2, मतलब s रिप्लेस करो ना. s मतलब you replace this term, मतलब you just put s minus a in place of s.
सो क्या होगा s माइनस 2 पूरा होल स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। सो सेम कॉन्सेप्ट यू विल अप्लाई इन दिस थ्योरम, सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। देखो मतलब फर्स्ट विल टेक लैप्लेस ऑफ साइन एच टी। क्या है लैप्लेस? लैप्लेस ऑफ साइन एच इंटू ए टी, व्हाट इज द फॉर्मूला? ए बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो हियर लैप्लेस ऑफ साइन एच टी मतलब a is here 1, see a is 1, so what is your answer? 1 by a square minus 1 square, that is 1 by a square minus 1. So you can write here Laplace of this one is a square minus 1. Are you getting my point? Sin h a t का formula है a by a square minus a square. So here a is 1, only just you put that formula 1 by a square minus 1 square since a is 1. Okay, so now what we'll do, then Laplace of this one, Laplace of e to the power 2t into sin ht क्या होगा? Here a is 2, मतलब 1 by s minus 2 whole square minus 1. मैंने क्या बोला? Just put s minus a in place of s. So a is what? 2. So s minus 2 whole square minus 1. Then इसको simplify करो, s square plus 4 minus 4s minus 1. So your answer is coming 1 by s square plus I think 3 minus 4s. ये हो गया आपका आंसर। So now coming to 6.1, exercise 6.1, question number 6. So we'll find out Laplace of e to the power minus t into sine 4t. Again same type of question, same concept will apply, fast shifting theorem. One thing remember, if it is given in the question e to the power at into the function, then directly will apply fast shifting theorem. Okay, fast shifting theorem क्या है ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। So इसमें what is the function? Tell me what is the function? Function is sine 4t. First you take Laplace of that function. So Laplace of sine 4t, you know Laplace of sine at क्या है? a by a square plus a square. So Laplace of sine 4t क्या होगा? a क्या है इधर? 4, मतलब 4 by a square plus a square, 4 square मतलब 4 by a square plus 16. So directly you can write here it is 4 by a square plus 16. So let it is fs, let it is fs. Then we'll find out Laplace of, our question is we'll find out Laplace of e to the power minus t. मतलब इसमें क्या होगा देखो, we'll find out Laplace of e to the power t into ft क्या था? क्या किसको रिप्लेस करना था? जस्ट f, ये f बार s minus a. So if I take Laplace of e to the power minus t by applying, you can write down by applying, इसको ब्रैकेट में लिखो, by applying fast shifting method. ठीक है, तो क्या लिखना है? इट इज फाइनली क्या होगा आंसर? तुम्हारा जो फॉर्मूला फाइनल आंसर है कितना है? फाइनल आंसर 4 बाय ए स्क्वायर प्लस 16. सो इसमें रिप्लेस करो, क्या रिप्लेस करो? e टू दी s माइनस a. You replace s minus a, just you put s minus a in place of s. ठीक है, सो s minus a मतलब क्या है? इधर क्या है? e टू दी पावर माइनस टी, मतलब e टू दी पावर 80 के साथ कंपेयर करो. सो a क्या है इधर? a is minus 1, a is minus 1. So if it is minus 1 then क्या होगा? s minus of minus 1. Getting my point? Then square, देखो s minus of minus 1, क्योंकि we'll have to take s minus a plus 16. So your answer is 4 by s plus 1 whole square plus 16. Then 4 by a square plus 1 plus 2s plus 16. So answer is 4 by
a square plus 17 plus 2s. Okay, so next is Laplace of sine omega t plus theta. Question number 7, exercise 6.1. See, you know sin a plus b का फॉर्मूला क्या है? मैं एकदम बेसिक पे जा रहा हूँ. साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. तो सेम थिंग विल अप्लाई. लैप्लेस ऑफ साइन, इसको स्प्लिट कर दो, साइन ए प्लस बी फॉर्मेट में लो. साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ओके, सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस वन. इसमें देखो, ये जो पार्ट कांस्टेंट पार्ट है, इसमें चेक करो, ध्यान से चेक करो. व्हेन वी आर टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी. अरे अगर एक फंक्शन है एफ टी, लैप्लेस का मतलब क्या है? मैंने बोला था क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए टी इंटू दैट फंक्शन इंटू डी टी. दैट मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो ये जो पार्ट है कांस्टेंट पार्ट है एंड ये जो पार्ट है कांस्टेंट पार्ट है. ठीक है, इसको बाहर ले आओ. मतलब cos थीटा इंटू लैप्लेस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू लैप्लेस ऑफ cos ओमेगा टी. ओके, सो इट इज cos थीटा लैप्लेस ऑफ साइन ओमेगा टी कितना है? साइन ए टी का लैप्लेस क्या है? a बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस साइन थीटा लैप्लेस ऑफ cos ओमेगा टी क्या है? s बाय लैप्लेस ऑफ cos ओमेगा टी क्या है? s बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.1. सो इसमें क्या करोगे? देखो, पहले 1.5 तो कांस्टेंट बाहर ले आओ. मतलब लैप्लेस ऑफ व्हाट? लैप्लेस ऑफ साइन 3t माइनस पाई बाई 2. ठीक है, सो नाउ यूज दिस फॉर्मूला. साइन ए माइनस बी क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. तो इसमें डाल दो, फॉर्मूला यू अप्लाई हियर. सो साइन ए मतलब 3t, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब लैप्लेस ऑफ. सो 1.5 तो कांस्टेंट है, देन cos पाई बाई 2 कितना है? 0 है. सो ये तो पूरा आंसर 0 ही हो जाएगा, मतलब 0 माइनस साइन पाई बाई 2 कितना है? 1 है. साइन पाई बाई 2 इज 1. सो मतलब ओनली विल टेक, जस्ट ए मिनट, लैप्लेस ऑफ 0 माइनस कितना है? cos 3t, क्योंकि ये पार्ट कितना है? 1 है. ठीक है, ये ब्रैकेट दे दो. सो नाउ 1.5 लैप्लेस ऑफ 0 तो 0 है, 0 माइनस लैप्लेस ऑफ cos 3t कितना है? लैप्लेस ऑफ cos 3t. गेटिंग माई पॉइंट? क्या करना है? सो 1.5 0 माइनस cos 3t का डिफरेंस लैप्लेस क्या है? cos 80 का लैप्लेस इज s बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब s बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर. ये हो गया आपका आंसर. सो 1.5 माइनस एस ए स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया आपका आंसर. Okay, so that is all about today's lecture. With this I'm ending this lecture. Hope you guys understood what I've explained. What I have explained ki I have solved, there are how many questions I have solved? 8 questions I have solved. Hope you guys understood. So thank you so much for watching my video. Thank you.